Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about existential psychology, and as you have seen that I have written unit 1 and unit 9 here both together. Why? Because the same topic can be studied for two topics in our syllabus, one from unit 1 which is existential psychology as a whole, right? And another, the existential psychotherapy in unit 9. So I'll compile these two topics together because these are both related, because existential psychology is the basis of existential psychotherapy. So in that manner we can compile existential psychology and existential psychotherapy together. So here we go. This is one of the videos of this series on existential psychology. So there will be more videos on this topic. So parallelly we will be dealing with two topics from our syllabus. So let's start then. I have noted down certain points from my AK Singh's systems book, and at the same time I have also included points from internet. And let me tell you that certain points which I have included here are not to be found in the textbooks, and those topic or those points on record I have set for this exam, and I know that at least twice I have faced questions on that particular point which is not to be found in the textbook, and only because the words are unfamiliar during the exam I had to come and search in the internet resources. So here we go. As you can see, the first point here is that existential psychology is a movement and not a system. So this is not an organized school of thought, but it was a movement. Then this is also considered as the third force, and you know which is the other psychological movement which is considered as the third force? Humanistic. So humanistic and existential together are considered to be the third force in psychology, and in the same manner humanistic psychology is also a movement and not a system. So two similar points. Third point aims at understanding a person in his total existential reality. So deals with the person as a whole in his total existential reality. We will come to the word existence. Fourth point deals with person as such an individual who exists as being in the world, Dasein. The word is Dasein. The origin is actually in Europe, for example Germany. So most of the words you will find of German origin, and I hope my pronunciations are up to the mark. So deals with person as such an individual who exists as being in the world, Dasein. So what is the first viewpoint of a person when we have to study his thoughts and behavior? We have to take him or her as an individual who exists as being in the world. The meaning has been described in the later section. And this being in the world phrase or the concept was put forward by Ludwig Binswanger. I had to actually search for the pronunciation of this word on the internet, websites, because I was not sure whether it's pronounced the other way or in this way, and I was actually wrong. The original pronunciation from my side was actually wrong. So the pronunciation is Ludwig Binswanger. Next, another notable figure in existential psychology are Medard Boss, Rollo May, Adrian Van Kaam, and it was developed in Europe and then spread to America. So the origin is in Europe. The roots are in Europe. And what are some of the views of existential psychology? They defied behaviorism. Okay, they rejected behaviorism or the approach
given by behaviorism. According to them, behaviorism has dehumanized the persons in a bid to be scientific and experimental. So साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल मेथड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते देते ऐसा हो गया कि ह्यूमंस को डीह्यूमनाइज कर दिया, एक पर्सन को डीह्यूमनाइज कर दिया, उसको जैसे एक रोबोट की तरह देखने लग गया. So phenomenological approach has been favored. So instead of the experimental and scientific approach in studying human nature, they have actually put forward the phenomenological approach where you take the subjective experience of each individual into consideration कि सबका experience अलग अलग है, तो उनको हम control condition में क्यों study करें. हर एक का अलग अलग जो experience है उसको हमें study करना चाहिए, और जो कि subjective है वो सबके लिए एक नहीं है. That is the phenomenological approach. So this is one point. Another point is that people search for meaning to life. जीवन का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, ये हम ढूंढते हैं. ओके, दिस इज़ अ टेंडेंसी ऑफ पीपल टू सर्च फॉर मीनिंग. और जिनको ये मीनिंग नहीं अभी तक समझ में आया है वो लोग क्या है, रेस्टलेस है या फिर न्यूरोटिक है, एंजाइटी हो रहा है उनको. सो द नेचुरल टेंडेंसी इज टू सर्च फॉर मीनिंग टू लाइफ एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इट. और एक पॉइंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन कर ही दिया था, दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक. हर कोई अलग है. ओके, सो यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल हैज़ बीन फोकस्ड ऑन. अनदर पॉइंट, रिजेक्ट्स एक्सटर्नल डिटर्मिनिज्म. सो डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप ये सोचते हैं कि हमारे साथ तो ये होना ही था या होगा ही, तो कोई सिचुएशन डिटरमाइन करेगा या फिर हमारा नसीब डिटरमाइन करेगा, तो वैसा नहीं है अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर्स. बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम पीपल हैव द फ्री चॉइस टू go for what they want, okay, to turn around their life for the better. So free will के ऊपर बहुत ज़्यादा focus दिया गया है by existential philosophers, so that's why they reject external determinism. Now, where are the roots of existential psychology? In existential philosophy. As we all know that philosophy is the basis for psychology in general, so for existential psychology also existential philosophy is the basis. Now, who were some of the noted philosophers? They were Soren Kierkegaard, Denmark; Jean-Paul Sartre, France; then Maurice Merleau-Ponty, वो भी फ्रांस के थे; Karl Jaspers and Martin Heidegger, Germany. So there were some notable figures from the existential philosophy. Now for existential psychology, who are the major contributors? First we will take the name of Adrian van Kamp. I have mentioned his name already in the previous slide. So we will now deal with one by one all the existential psychologists. So first we take Adrian van Kamp, and this is not to be found in the textbook. I had to borrow these points from internet resource, and not much is to be found about him. And he was the author of a voluminous series which was named Formative Spirituality. And he was a priest of the Catholic origin, and he edited the Review of Existential Psychology and Psychiatry along with Rollo May and Henry Elkin. So इनका ये contribution रहा है existential psychology के तरफ. So ये हम यह conclude कर सकते हैं. यहाँ पे एक दूसरा point I want to include, which is what is phenomenological approach. So phenomenological approach, what does it do? It describes the experience state of consciousness. हर एक का consciousness को कैसे वो person experience कर रहा है उसका description phenomenological approach के द्वारा हमें मिलता है. And second point, that makes distinction between intuition, analyzing and
डिस्क्राइबिंग। तो 3 प्रोसेसेस को डिस्टिंग्विश करता है phenomenological approach, and what are those 3 processes? One is intuition, and what is it? Intensive concentration on the phenomenon of one's consciousness. एक टाइम पे आपके कॉन्शियसनेस पे जो एलिमेंट है उसी पे आप इंटेंसिवली कंसंट्रेट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? इंट्यूशन बोलते हैं, या फिर द एक्ट ऑफ इंट्यूशन बोलते हैं। देन वी कम टू एनालाइजिंग, एंड व्हाट इज एनालाइजिंग? एनालाइजिंग मीन्स सीइंग द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अंदर जो कोई एलिमेंट्स है, एक से ज़्यादा या फिर और ज़्यादा, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको देखने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम analyzing. And what is describing? Describing is giving an account of consciousness in such a language that can be understood by others. आप जो फील कर रहे हैं आपके कॉन्शियस में जो है, तो आप वो किसी और को इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं ताकि वो दूसरा भी आपकी बातों को समझ पाए, तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्राइबिंग। So these are the 3 processes which was distinguished by the phenomenological approach. Now let's move to the different modes of being in the world, कि हम in relation to the universe हम as human being exist करते हैं, तो किस किस मोड में हम रहते हैं, okay, during that existence of us. And this was put forward by Ludwig Binswanger, and the first mode is the singular mode. And what does this mean? A man lives only to himself. Okay, singular mode में क्या है? A man lives only to himself. जैसे एक लोनर होता है और एक अकेला व्यक्ति. So that is the singular mode. What is the dual mode? Two people have mutual interaction. And where can we see dual mode? Where maybe, for example, 2 people are in love. So in a love relationship we can see dual mode, that the 2 people have mutual interaction. Then we have the plural mode. और प्लूरल मोड में क्या होता है? ए पर्सन मेक्स इंटरेक्शंस विथ सेवरल पीपल. बहुत लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम प्लूरल मोड. और जो मोड्स ऑफ बीइंग है उसके ऊपर और भी दूसरा एक सेक्शन है जो मैं इस लेटर पार्ट में मैंने डाला है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा और टर्म्स देख लेते हैं जो मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है. सो दिस इज़ अनदर वर्ड विच इज़ वर्ल्ड डिज़ाइन. अब वर्ल्ड डिज़ाइन का मतलब क्या है? और जर्मन वर्ड है इसका Weltanschauung, and this word cannot be found in your textbook, so but I can assure you, so my data limit is being reminded. No problem, I have enough of extra data. Anyways, world design and Weltanschauung, this can be found in your examination. You never know that the German word will be included and you will be asked the meaning of it. So I have put this word from the internet resource here, though it was not to be found in the textbook. So a person develops a world design which is a highly subjective and unique mode of being in the world. So हर एक person के लिए उनका world design अलग अलग है, वो खुद बनाते हैं इसको, the design of the world, वो खुद उनको डेवलप करते हैं. और वो क्या होता है? हाईली सब्जेक्टिव, मतलब डिफ़र करेगा अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक. एंड यूनिक मोड ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड, हर एक का यूनिक जो मोड है बीइंग इन द वर्ल्ड और एग्जिस्टिंग, उसका ये एक सिस्टम है, जो डिज़ाइन है हर एक का अलग अलग है, टू व्यू द वर्ल्ड और टू see the world. Another point, being in the world consists of a threefold reality: physical, human, environment and the person's himself. तो physical reality का मतलब क्या है? Surrounding of the person, जो surrounding में है उस person के, उसको हम physical reality बोलते हैं. और एक point है कि a person intends to go beyond the world. जो person है वो हमेशा अपने एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड भी जाना चाहता है, टू एक्वायर मोर हाइट्स. एंड दैट दैट हाइट विल अगेन सब्जेक्टिवली इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव विच विल इंडिविजुअली डिफर, कि हर एक के लिए वो अलग अलग है.
Then another point, rejected materialism and positivism. सो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी ने क्या किया था, मटेरियलिज्म और पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट किया था. पॉजिटिविज्म का मतलब, मटेरियलिज्म तो आप लोगों को पता ही है, और पॉजिटिविज्म का मतलब है हर कोई चीज़ बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली और आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन, प्रूफ, ऑब्जर्व्ड, ओनली देन थिंग इज एक्चुअली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू. सो वो पॉजिटिविज्म है, रफली दिस इज़ द आइडिया. सो इन अप्रोचेस को एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी ने बिल्कुल रिजेक्ट किया है. देन कॉन्सेप्ट ऑफ बिकमिंग और ग्रोथ, ये क्या है, दैट एग्जिस्टेंस चेंजेस एंड देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी फॉर बिकमिंग समथिंग बेटर. सो बिकमिंग और ग्रोथ का क्या मतलब है कि हर एक का जो एग्जिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है. ऐसा नहीं कि वो स्टैटिक है या फिर फिक्स्ड है, वो अनचेंजेबल है, ऐसा नहीं है. हम अपने हर एक का हम अपना अपना एग्जिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं फॉर द बेटर. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिकमिंग और ग्रोथ. एंड दोज हु रिफ्यूज टू बिकम रिमेन फिक्स्ड एंड स्टैटिक. जो कोई चेंज नहीं होना चाहता है वो स्टैटिक और फिक्स्ड रहते हैं, और जो फिक्स्ड या स्टैटिक रहते हैं वो क्या बन जाते हैं, न्यूरोटिक पर्सन्स. सो न्यूरोटिक पर्सन्स हैव सच फिक्स्ड और स्टैटिक मोड, कि वो लोग चेंज नहीं हो पाते हैं, अपने जो करंट एग्जिस्टेंस है उसमें वो लोग स्टक हो जाते हैं. सो दिस इज़ द concept of becoming or growth. Now let me tell you that these points are quite philosophical, and from the exam point of view I would suggest not to go too deeper into all the words and concepts as given by existential philosophers. It will be a bit difficult for us to grasp the core meaning of everything, but for our knowledge we need to go through all the points possible. A factual knowledge should be gained, so be ready with that approach and not the other way. Okay, let's continue. So this was the portion that I was mentioning, where we have to actually see for other internet resources, and this is the one, and this has been repeated in the examination at least twice in my knowledge, maybe more than that. So this is, you can say, a previous question topic. Now according to Ludwig Binswanger, there are also these three types of modes of existence, apart from the singular mode, dual mode, plural mode. Now we will go through these different type of modes of existence given by Ludwig Binswanger, and these modes of existence allowed humans and non-human animals to be separated based on this concept. Okay, सो ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस के बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो किसके बेसिस पे है, ये मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस के बेसिस पे है. एंड दिस मोड्स इंक्लूड, क्या क्या है वो थ्री मोड्स, द उमवेल्ट, द अराउंड वर्ल्ड, इसका मीनिंग हम अभी देखेंगे, द मिड वेल्ट, द विथ वर्ल्ड, एंड द ईगन वेल्ट, द ओन वर्ल्ड. आई डोंट नो माई प्रोनाउंसिएशंस are up to the mark or not. I'm really not sure. These are quite foreign words for me. Umwelt can be applied to both non-human animals and humans. ये दोनों के ऊपर apply हो सकता है, and it depicts the relationship between the organism and its environment. So Umwelt में आप लोगों ने देखा था, आप इन तीनों पॉइंट को अगर याद कर लेंगे तो इसका मीनिंग आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर रह जाएगा. Umwelt का मतलब है दी अराउंड वर्ल्ड. अराउंड वर्ल्ड इसका मतलब है. तो अराउंड वर्ल्ड से यह मीनिंग क्या बनता है, इट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. दैट मीन्स उनके चारों तरफ का एनवायरनमेंट, उसको अराउंड वर्ल्ड हम कह सकते हैं. और एक पॉइंट है कि नॉन ह्यूमन एनिमल कैन नॉट पॉजेस द वर्ल्ड एज ह्यूमंस डू. ठीक है, or non-human animals can neither design world nor open up world nor decide independently in and for a situation. So though this concept is applicable to both non-humans and humans, but the thing is that only humans can design their existence accordingly and not the non-human animal.
And as for humans, they do possess the world in the way that they can transcend their being above the level of non-human animals by climbing above it, the world that is, in care and of swinging beyond it in love. So this is a quoted portion given by Ludwig Binswanger, which was mentioned, and I have put it here. Then we have the Mitwelt. What is the meaning of Mitwelt? Let us go through to the previous slide. The Mitwelt, the with world. Okay. Now let's go through the meaning. Refers to the mode of existence involved in interspecies relations. स्पेशीज और स्पेशीज के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको दर्शाता है Mitwelt and applies mainly to humans in the sense of human interaction. So that means human interaction को ये दर्शाता है. It also refers to the shared world that we have with other people, that is weaving our lives according to our relationships with other humans. So Mitwelt में और क्या एलिमेंट है? द शेयर्ड वर्ल्ड, जो हम दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ शेयर कर रहे हैं. दैट्स वाई द फ्रेज विथ वर्ल्ड. Eigenwelt refers to a person's own subjective experience or the self world, जो अपना खुद का एक दुनिया है उसको दर्शाता है Eigenwelt. Relationship that one has with themselves, अपने आप के साथ जो रिलेशन है उसको ये बयां करता है. Then we have this mode of existence is the most difficult to grasp because of its vague definition. So इसका जो मीनिंग है थोड़ा सा वेग होता है, इसीलिए हमें ग्रेस्प करने में डिफ़िकल्टी होती है. ये एक इसका फीचर है. And Binswanger believed that to fully understand a person, you must take into account the specificities of all three modes of existence. तो एक पर्सन को अगर हमें wholly जानना है तो हमें तीनों का तीनों मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस स्टडी करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि एक मोड ऑफ एग्जिस्टेंस के द्वारा हम एक पर्सन को समझ पाएंगे. सो टू फुल्ली अंडरस्टैंड अ पर्सन वी मस्ट टेक इन टू अकाउंट द स्पेसिफिसिटीज ऑफ ऑल थ्री मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस. तीनों का हमें एक स्पेसिफिसिटी को कंसिडरेशन में रखना होगा. ओनली देन कैन वी अंडरस्टैंड दैट पर्सन फुल्ली. So for today's video, this is the end. I'll continue this series on this topic and that will be uploaded maybe tomorrow. So thank you for watching till the end. Study well and take care. Bye bye.